बच्चों, हम आज हिंदी का ताश पढ़ेंगे। दूसरा सत्र का चैप्टर नंबर 10 सीखो, जिसका प्रकार हमें यहाँ काव्य में दिया है। तो चैप्टर नंबर 10 सीखो। सीखो का अर्थ होता है कुछ सीखना। तो हमें यहाँ जो काव्य दिया गया है उसमें से हमें कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है, वो हमें आज पढ़ना है, जिसका कवि का नाम है श्रीनाथ जी। तो इस काव्य में, इस कविता में प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ जी कवि ने हमें क्या सूची इसमें बताई है, हमें क्या इसमें दिखाया है कि हमें किस किस चीजों से हमें कुछ सीख लेनी है। तो जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। तो इस काव्य में हमें प्रकृति के उन तत्वों की बात की गई है जिसमें हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। जैसे कि हमें यहाँ देख सकते हैं फूल, भंवरे, सूरज, पेड़ और पृथ्वी इत्यादि की से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो इस काव्य में हमें ये सीखना है कि इन प्रकृति के तत्वों में से हमें कुछ ना कुछ जीवन में कुछ सीख मिलती है। तो चलो हम काव्य की शुरुआत करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलोथी हमेशा હસવાનું આપણને શીખવા માટે કહે છે કે ફૂલો પાસેથી હંમેશા હસતા રહેવાનું શીખો। ભમરા, ભવરો યાની ભમરા, ભમરા પાસેથી હંમેશા ગુણગુણ કરવાનું એટલે કે હંમેશા ગાતા રહેવાનું શીખી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ભમરા હંમેશા શું કરતા હોય, ગું ગું કરતા હોય છે। એટલે આપણને અહીં ચિત્રમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ફૂલો પાસેથી નિત એટલે કે હંમેશા હસવાનું શીખવું અને ભંવરા પાસેથી હંમેશા ગાવાનું એટલે કે ગુનગુનવાનું, ગાતા રહેવાનું શીખવાનું કહે છે। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी झाड़, वृक्ष, વૃક્ષની ડાળીઓ પાસેથી હંમેશા એવું શીખો કે આપણું શીશ છે, આપણું મસ્તક છે, માથું છે, હંમેશા નમાવવાનું। ત્યાર પછી જોઈએ બીજી કડીની અંદર શું શીખવાનું કહે છે કે શીખ હવા के चोको से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। હવાથી આપણને શીખ લેવાનું કહે છે કે પવનની લહેરો પાસેથી શીખો કે મનમાં સરસ મજાનો કોમળ ભાવ આપણે હંમેશા વહેતાવતા રહીએ। શું કે છે, હવાની જેમ આપણે મનની અંદર હંમેશા બધા સાથે કોમળ ભાવ વહેતાતા શીખીએ। दूध અને પાણી પાસેથી શું શીખવાનું કે છે કે दूध અને પાણી પાસેથી એવું શીખવાનું કે दूध અને પાણી પાસેથી એકબીજા સાથે ભળવાનું અને ભેળવી દેવાનું આપણને શીખવાનું કે છે। કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે દૂધમાં પાણી નાખીએ તો સરસ મજાનું ભળી જાય છે। એટલે આપણે જીવનની અંદર એકબીજા સાથે दूध અને પાણીની જેમ ભળતા રહીએ એવું શીખવાનું અહીં આપણને કવિ કહે છે। ત્યાર પછી જોઈએ કે सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरजनी किरणोथी શું શીખવાનું કહે છે કે સૂરજના કિરણો પાસેથી જાગવાનું અને બીજાઓને જગાડવાનું શીખો। ત્યાર પછી વૃક્ષો પાસેથી અને વેલા પાસેથી, લતા એટલે વેલો અને પેડો એટલે કે વૃક્ષો એટલે કે વેલો અને વૃક્ષો પાસેથી એવું શીખવાનું છે કે એકબીજા પાસેથી સૌને અપનાવવાનું, એકબીજાને ગળે મળવાનું એટલે કે એકબીજાને આપણા જીવનની અંદર અપનાવવાનું શીખવાનું કહે છે। કારણ કે વેલો અને વૃક્ષ બંને એકબીજા સાથે હંમેશા મળતા હોઈએ છે। તો એવી રીતે આપણે પણ જીવનની અંદર એકબીજા સાથે મળતું રહેવાનું શીખવાનું કહે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્યનું નામ જ શીખો છે એટલે કે કંઈક શીખવું। केनी पासेथी, तो कि इन प्रकृति के तत्वों के पास से हमें कुछ सीखना है। आगे देखते हैं मछली के पास। अब मछली से क्या हमें सीखना है? मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़पड़ कर मरना।
पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। मछली यानी माछली, માછલીથી પણ આપણને કંઈક શીખવાનું કહે છે કે માછલી પાસેથી પોતાના દેશ માટે, સ્વદેશ એટલે કે પોતાનો દેશ, પોતાના દેશ માટે તડપી તડપીને મરવાનું. અને પતઝડ એટલે કે પાનખરની ઋતુ જ્યારે આવે છે ત્યારે વૃક્ષોના બધા જ પાંદડા ખરી જાય છે. તો આ એ શું છે? એના માટે એક દુઃખની વાત છે. તો આ દુઃખના સમયે પણ વૃક્ષ છે એ પડીને ભાંગી નથી પડતું, પણ ધીરજ રાખી અને એનો સામનો કરે છે. એટલે કે વૃક્ષો પાસેથી આપણને એ જાણવા જણે છે, એ શીખવા મળે છે કે આપણા જીવનની અંદર કંઈ પણ મુશ્કેલી આવે, દુઃખ આવે, આપણે ધીરજ રાખવી જોઈએ. તો માછલી પણ, જ્યારે માછલીને આપણે જાણીએ છીએ કે પાણીથી બહાર કાઢી એટલે તે મૃત્યુ પામે છે, એટલે પોતાના માટે, પોતાના દેશ માટે તે તડપી તડપીને મરે છે. એટલે કે આપણે પણ આપણા દેશ માટે, આપણા મુલ્ક માટે કંઈક કરવું જોઈએ, એવી શીખ અહીં આપણને આપવામાં આવે છે, જે માછલીના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવેલું છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે દીપક સે सीखो, जीतना हो सके अंधेरा हरना. पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना. दीपक यानी दीवो. દીવાથી શક્ય હોય તેટલું અંધારું છે એ દૂર કરે છે. આની પાસેથી કંઈક શીખવાનું છે કે શક્ય હોય તેટલું અજવાળું ફેલાવે છે અને અંધારાને દૂર કરે છે. તેમજ પૃથ્વી પાસેથી, એટલે કે આપણે જે પૃથ્વી ઉપર લોકો રહીએ છીએ, પૃથ્વી પાસેથી એટલું શીખવાનું કહે છે કે પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનું શીખો. પૃથ્વી સે શીખો એટલે કે પૃથ્વી પાસેથી પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનું શીખો. जलधारा से सीखो, आगे जीवन पथ में बढ़ना. और धुएं से सीखो, हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. जलधारा यानी नदी, जो વહેતી જ જાય છે, વહેતી જ જાય છે, ક્યારેય ઊભી રહેતી નથી. પાણીની વહેતી આ ધારા, જલધારા છે, એની અંદર જીવનમાં સદાય આગળ વધવાનું આપણને શીખવે છે. આ જલધારા દ્વારા આપણને જીવનમાં આગળ વધવાનું કહે છે. જીવન પથ મેં યાની જીવનમાં જેમ પાણીનો પ્રવાહ છે તે આગળ ને આગળ વધતો જાય છે, તેમ આપણે પણ જીવનમાં આગળ ને આગળ વધવું જોઈએ. ઓર એટલે કે અને ધુવાડો જે થાય છે એ હંમેશા ઊંચે ને ઊંચે કેવી રીતે ચડવું એ આપણને શીખવાડે છે. કેવી રીતે આપણે સરસ મજાનું આગળ વધવું, ઊંચે ચડવું એટલે કે ઉન્નતિના આપણે ઉપર ચડવું. કંઈક પામવા માટે આપણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, પણ આપણે ઊંચાઈ જોઈ અને આગે ને આગે એમને બધું જવું. એટલે કે અહીંયા ધુવાણો, જે કંઈ ધુવાણો થાય છે એની પાસેથી આપણને હંમેશા એ શીખ મિલે છે કે હંમેશા ને હંમેશા માટે આપણે છે એ ઊંચે ને ઊંચે ચડવું જોઈએ. પાછું થોડીક મુશ્કેલી આવે એટલે પાછું વળી અને નીચે ન આવવું જોઈએ, પણ આગળ ને આગળ વધવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છેલ્લી પંક્તિ 2 જે છે એમાં આપણને આપણા જીવનની અંદર આગળ વધવાનો સરસ મજાનો બોધ આપે છે. તો આ કાવ્ય શ્રીનાથજી સિંહ નામના કવિએ સરસ મજાનું જીવનની અંદર કંઈક શીખો એવું નામ આપી અને આપણને પ્રકૃતિના ઘણા બધા તત્વો દ્વારા આપણને માહિતી આપી કે કયા તત્વથી આપણને જીવનની અંદર શું શું શીખવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોઈએ શબ્દાર્થ. તો આપણે સેમેસ્ટર 1 ની અંદર પણ શબ્દાર્થ આપણે હિન્દીની પાકી બુકમાં લખતા, તો સેમેસ્ટર 2 માં પણ આ શબ્દાર્થ છે તે આપણે હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખશું, જેથી કરી અને આપણે અઘરા શબ્દના અર્થ મેળવી શકીએ. ત્યાર પછી જોઈએ મુહાવરે. તો મુહાવરે પણ આપણે હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખશું. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ અભ્યાસ. તો અભ્યાસ પણ તમારે
તમારી હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખવાનું રહેશે। એમાં પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપણને એમ કહ્યું છે कि किससे क्या सीखे वो सोच कर बताना है। तो हम अभी पढ़ा कि दीपक से हम क्या सीखते हैं, फिर भौरव से क्या सीखते हैं, फूलों से क्या सीखते हैं। तो वो सोच कर आपको पास में लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो दिया गया है वो निम्नलिखित वाक्यों का उदाहरण हमें दिया गया है, उसे अनुसार लिखिए और स्वरभार देकर पढ़िए। यानी हमें उदाहरण यहाँ दिया गया है, जैसे कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो दूसरे वाक्य में मैंने के नीचे जो अंडरलाइन है वो कल के नीचे आ जाती है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। उसके बाद मैंने कल आपको, यहाँ मैंने आएगा, यहाँ कल आएगा, यहाँ आपको, यहाँ यह और यहाँ किताब और दी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या है, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। एक उदाहरण हमें यहाँ दिया गया था। अब इस दूसरे वाक्य को हमें पहले जैसे लिखना है, जैसे कि पहले में आएगा मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। दूसरा वाक्य फिर से लिखेंगे मेरे जन्मदिन, तो जन्मदिन पर अंडरलाइन आएगी। उसके बाद तीसरी बार दिखेंगे कि मेरे जन्मदिन पर, दोस्तों के नीचे अंडरलाइन आएगी और मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे, उसके नीचे, और लास्ट में उपहार उसके नीचे आएगी। तो इसी तरह आपको तीसरा वाक्य भी आपको बनाना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। स्वाध्याय भी आपको सोच समझकर अपनी हिंदी की पाकी बुक में लिखना है। यहाँ क्या है, जोड़े मिलाइए, એટલે કે जोड़ बनावानु छे। जैसे हम एक देख सकते हैं कि फूल, तो फूल से हमें क्या सीख मिलती है, हमेशा हंसते रहने की। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्न नंबर 3 में जो हमें यहाँ पंक्ति दी गई है उसका भावार्थ समझाना है, जैसे हमने अभी समझा। सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हवे इसका वाक्य में, कविता में पंक्ति में कौन सी पंक्ति इसमें बंदिशती है, तो सुख हो या दुख हो हमें हमेशा धीरज रखनी चाहिए। तो एक पंक्ति आपको काव्य में से ढूंढनी है और इस भावार्थ से लगती कौन सी पंक्ति काव्य में है वो हमें यहाँ लिखनी है। जैसे हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, तो पृथ्वी से सीखो हर प्राणी की सच्ची सेवा करनी, तो वो पंक्ति यहाँ हमें लिखनी है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। उसमें हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 में कविता में से ही संज्ञा, विशेषण और क्रिया ढूंढना है। विद्यार्थी मित्रों, हमने सेमेस्टर 1 में संज्ञा सीख चुका है, विशेषण भी सीखा था और क्रिया भी सीखी थी। संज्ञा यानी कोई भी नाम, विशेषण यानी संज्ञा के नाम में कुछ विशेष बात बताता है, वैसा पद जिसे हम विशेषण कहते हैं। क्रियापद यानी क्रिया यानी क्या, कि कोई भी क्रिया हमें दिखाती है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि गाना, खाना, चढ़ना, बढ़ना, वो सब क्या होता है, क्रिया। तो इस काव्य में, इस कविता में कौन कौन से संज्ञा है, कौन कौन से विशेषण है और कौन कौन सी क्रिया है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि इस कविता में एक शब्द है फूल। कौन सा, फूल। तो कैसा फूल, तो के कोमल फूल। तो ये कोमल भी क्या हुआ, विशेषण। फूल यानी हुआ कोई भी नाम यानी संज्ञा, विशेषण कोमल फूल, और क्रिया कोई भी हम काव्य में से ढूंढेंगे, चढ़ना, बढ़ना, ऐसी क्रिया हमें कविता में से ढूंढकर यहाँ लिखनी थी। सर्वप्रथम हम विद्यार्थी मित्रों कविता में से संज्ञा ढूंढेंगे यानी कोई भी नाम। उसके बाद
कविता में से विशेषण ढूंढेंगे। विशेषण मैंने आपको सिखा दिया। विशेषण यानी नाम के पद में कुछ विशेष बात होती है, जैसे कि ऊंचा, नीचा, ये क्या है? विशेष है। बड़ा, छोटा और क्रिया, और कविता में से हम क्रिया ढूंढेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको प्रैक्टिस आपकी बुक में करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में से विशेषण, उपयुक्त यानी ऊपर के कोष्टक में से विशेषण और क्रिया का शब्द लिखा और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सर्वप्रथम हमने जैसे कि मोहन सच्चा बालक है, तो ये सच्चा है वो क्या है? विशेषण है। रीता गीत गाती है, गाती है वो क्या है? तो कि क्रिया। ऐसे हमको विशेषण और क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है योग्यता विस्तार, यानी हमें कुछ सीखना है। इससे आप क्या सीखेंगे उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि कुत्ता, विद्यार्थी मित्रों हम जानते हैं कि इस इकाई में से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ सीख मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ ऐसे कैसे उदाहरण दिया गया है कि उसमें से हमें क्या सीख मिलती है। जैसे कि पहला दिया गया है कुत्ता, तो कुत्ता हमेशा क्या करता है? वफादारी। तो कुत्ता से हमें वफादारी जीवन जीने की सीख मिलती है। उसके बाद अगरबत्ती, तो अगरबत्ती हमेशा अच्छी अच्छी सुवास बहकाता है, इसलिए हमें अगरबत्ती से अच्छी सुवास फैलाना सीखना है। उसके बाद जो हंस, सियार, बुलबुल, मधु मक्खी, नदी, चींटी और मकड़ी और कंगारू, ऐसे शब्द हमें दिए गए हैं। तो आपको इसके बारे में चर्चा करनी है और कहना है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। उसके बाद है, क्या तुम अपने आसपास की चीजों से भी कुछ सीख सकते हो? यदि हाँ तो लिखो यहाँ। तो यहाँ आपको लिखना है कि आप कौन सी आसपास की चीज से कुछ सीख सकते हैं। कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात की गई। अगर हम किसी से कुछ भी ना सीखे तो क्या होगा? तो इस विचार को आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यही आपका हमारा बहुत ही छोटा सा सुंदर सीखो काव्य पूर्ण होता है।